Hey all, I hope everyone is doing great and feeling on top of the world today. Yes, starting your day on a positive note makes all the difference that you can ask for, because it is very important to give that positivity to yourself and also the ones around you. So power the positive seeds in you. So new day, new video, and as I already said, it is all about energy. After all, energy is the building block of our life. So today's topic for discussion is best power sector stocks to invest in for the long term. In this video, we will take a look at a few of the top Indian stocks that perform in the power sector, and how you can build your portfolio around these stocks to gain more exposure to the long-term India's growth story. So let's begin the video. So food and energy, फूड और एनर्जी सबसे दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं हमारी लाइफ में. इसके बिना हमारी कोई गति नहीं है. विदाउट फूड एंड एनर्जी वी कैन नॉट इवन सर्वाइव फॉर अ कपल ऑफ डेज. इट इज वेरी हार्ड. खाना और रिसोर्सेज एनर्जी के बिना हमारा मूवमेंट बहुत मुश्किल है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. एंड आफ्टर द यूक्रेनियन वॉर, we have come to know more of its importance. वैसे भी we knew, but after the Ukrainian war, आप देखिए कि इसका इफेक्ट कहाँ तक जाता है. We have only thought of it from our perspective. लेकिन आप अगर इसकी scarcity हो जाए, इसमें कुछ hamper हो जाए trade routes, तो इसका इफेक्ट पूरे ग्लोबल सिनेरियो पे भी आ सकता है. किस तरह से यूक्रेनियन वॉर के बाद स्कार्सिटी हुई फूड की, क्योंकि ट्रेड रूट्स वर हैम्पर्ड. देन देयर वर इन्फ्लेशन इन प्राइसेस इंक्रीज सो मच. सो ऑल दीज हैड लेड टू अ ब्रेकडाउन ऑफ इकोनॉमीज फॉर मेजर कंट्रीज इन अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका. तो इसीलिए आप देखिए कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थॉमस एडिसन, it has no stopping, and it has played such an important role in the growth of economies as well as in the growth of industries overall. So इंडिया की भी जो पावर या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो आप कह लें, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आफ्टर यूएसए एंड चाइना. और इंडिया की जो अभी ये इंडस्ट्री की वैल्यूएशन आप देखें तो इट इज अराउंड $160 billion, और इफ यू कन्वर्ट इट इनटू रुपीज इट कम्स टू 14 लाख करोड़. तो आप देखिए कितना ह्यूज इंडस्ट्री है. बिकॉज इंडिया की एक तो कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग है. दूसरा जो इसका हमारे कंट्री का पर कैपिटा इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. इसकी वजह से जो हमारे अप्लायंसेस की डिमांड है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है. अगर आप देखें तो पिछले 10% इसका डिमांड हमारे पिछले सालों में बढ़ गया है. और अगर आप देखें तो आप पूरे पावर सेक्टर को आप डिवाइड कर सकते हैं फॉर एनालिसिस पर्पसेस. तो इंडिया का जो पावर सेक्टर है उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले आता है जनरेशन ऑफ पावर. इसके लिए हमको चाहिए पावर एसेट्स. कौन से वो प्रोड्यूसिंग एसेट्स होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हो गए या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, गैस पावर प्लांट्स हो गए. तो ये हो गया हमारा जनरेशन पार्ट. दूसरा होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि वायर्स हो गए, सब स्टेशन हो गए. तो इनका काम होता है इस इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई है उसको अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग दिशाओं में भेजना. और तीसरा जो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट अभी उभर कर आ रहा है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, जो इंक्लूड करता है सोलर और विंड एनर्जी प्राइमरीली. तो आप पूरे इंडिया के जो पावर सेक्टर हैं आप इसको आराम से इन 3 सब सेक्टर्स में डिवाइड करके फॉर योर फर्दर एनालिसिस यू कैन मूव फॉरवर्ड. जस्ट लाइक फूड एंड हेल्थ इंडस्ट्री, investing in energy will give you an exposure to an investment in recession proof industry. क्योंकि जैसे कि हम फूड और हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम अपनी एनर्जी पावर नीड्स पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. वी नीड पावर, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एनीथिंग दैट वी डू. आज के दिन आप घर के कुछ काम ले लो, आप कुकिंग वगैरह भी ले लो, या फिर आप अपने ऑफिस का काम ले लो, आप कुछ भी ले लो, बच्चों की पढ़ाई है, गर्मी में एसी के बिना नहीं रह सकते, लाइट्स के बिना नहीं रह सकते. सो इलेक्ट्रिसिटी के बिना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लीड इवन अ सिंगल डे. So it has become an indispensable parts of our life. तो इसीलिए investing in the power industry will give you an exposure to your investments into a recession proof industry. अब हम देखें, और इसमें जो अभी investment story है वो भी काफी strong है. Why? Because the valuation is very cheap, very low when you compare to the other sectors. Hence it makes it more lucrative. Also most of the stocks that deal in the power sectors are the PSU, और PSU को वैसे ही लोग डिस्काउंट कर देते हैं कि गवर्नमेंट ओन्ड अंडरटेकिंग्स है, पर ऐसा नहीं है. अभी जो अपस्विंग आ रहा है इन स्टॉक्स में, बिकॉज ऑफ देयर इज अ चेंज इन द वे इंडिया इज मूविंग. इंडिया में आप देखिए अब कितनी तरक्की हो रही है, कितना काम हो रहा है, कितना रिन्यूएबल एनर्जी का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, कितनी अवेयरनेस आ गई है, क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स है. तो इन सब मामलों को मद्देनजर रखते हुए अभी जो हमारे
इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो और इस तरफ उनका झुकाव बढ़ते जा रहा है। और अगर आप देखें जो निफ्टी पावर इंडेक्स है, इट हैज अंडर परफॉर्म्ड ओवर द लास्ट 10 years with an annual return of just 5%, which means that the stocks are not in a good value zone. So as an investor, it makes good sense to enter into this market as of now. So let's see who are the major players in the Indian power or electricity sector that you as investors can have a look at. So number 1 हमारे लिस्ट में है power grid. So yes, power grid owns practically almost all the transmission capacity in India. Power grid की अगर आप valuation wise देखें तो इसमें इसका जो cash flow yield है, dividend yield है with 5% is very good. Also, it enjoys a monopolistic status in India, and it has cheap valuations और future growth prospect भी काफी strong है इस कंपनी का। और जो हमने cash flow और dividend की बात की है वो भी बढ़ते ही जाना चाहिए आगे, क्योंकि कंपनी की जो मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर थी वो हो गया है पीछे। तो अब जितना भी कंपनी जनरेट करेगा, इट विल वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट एज रिटर्न्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो पावर ग्रिड पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, यू कैन सी द लिंक फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन अबव, सो इफ इंटरेस्टेड प्लीज हैव अ लुक। सो इसमें मैंने एकदम इन डिटेल्स आई हैव covered why it makes a strong investment bet for investors today. Also, power grid is now expanding into data centers and renewable energy, and it is also taking a good stand over one sun one world one grid concept. तो इन वजह से अभी इस स्टॉक में काफी इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ गया है, as was evident by Parag Parikh, who recently bought a huge lot of this stock. So next on the list comes NTPC. Now NTPC is also one of the largest power generators in the company and owns huge number of assets. So it is one of the better run PSUs in the country right now, and also it is expanding its renewable energy footprint, और वो अपने एक subsidiary RE subsidiary की भी IPO plan कर रहे हैं in the next 2-3 years. So this makes NTPC also one of the good power companies to invest in India currently. Also RE focus के वजह से stock का जो स्टॉक प्राइस है, इस कंपनी का स्टॉक प्राइस है, वो भी काफी अपस्विंग में है in the last 2 years. Next on the list is Tata Power. So Tata Power from the house of Tatas is no new in this country. Tata Power has a long-standing history in India's business area, and also it has a large presence across the entire power space from manufacturing, generation, transmission, distribution. तो इसके वजह से Tata Power का एक अच्छा खासा इस इंडस्ट्री में स्टैंड बनता है, and it will also benefit from the privatization of the distribution companies in India because of the inefficiency that currently exists. तो इसके वजह से टाटा पावर को काफी एक अच्छा अपस्विंग मिल सकता है, because it also has a good backing, good governance of the Tatas. Now another company to look at is CESC. CESC is an RPG group company. It's just like the Tata Power company, but much smaller in size. This company has a huge presence, huge selling part in West Bengal and other states around, and it can benefit greatly from DISCOM privatization. So इस company के भी stock price अभी कम है, valuation कम है, but it will make a good value buy for the long term process. Next on the list comes Torrent Power. Torrent Power of Gujarat is just like CESC in West Bengal. इस कंपनी की भी ये कंपनी भी रेन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में डाइवर्सिफाई कर रही है, और इसकी काफी लॉन्ग स्टेबल हिस्ट्री रही है गुजरात में। आज के दिन इसका वैल्यूएशन मार्केट कैप वैल्यू है अराउंड 25,000 करोड़, और इट हैज गिवन रिटर्न्स ऑफ अराउंड 22% in the last year. The Adani Group owns a large number of companies in this sector, like Adani Transmission, Adani Power, Adani Green Energy. But given the recent controversies and the high valuation, I would recommend investors to stay away from this stock. However, this company has a huge variety of power assets in different parts of our country. It's very uncertain. The future for this stock is really uncertain as of now. Now, besides these companies, you can also look at Renew Power, which is a pure play renewable energy company and is listed in USA. Other than this, we have JSW Energy, which is also similar. And after the buying of Mitra, it has a large number of solar and wind energy assets, but I'm not sure about its future prospects. Now, you can also look at the other government stocks like REC and PFC, which are financing institutions and lend money mostly to power projects. They have lower valuations of around 3 to 4 PE, but their dividend yield is excellent. It's very good. However, investor का interest इसमें pick नहीं होता है because of its government PSU status, और इसलिए investors इन सब stocks से दूर रहना चाहते हैं. But इसमें काफी potential है, इसके काफी valuation wise it is very good, and so it will make a good addition for your long term portfolio.
So I'm not a registered SEBI investor advisor. So for all your investment purpose needs, you should meet an RIA. This video is made only for education purposes. Now, in closing, I would like to say that power industry has got a long runway for growth in India of around for the next 15-20 years. So investors को वैल्यूएशन भी इस सेक्टर में अभी काफी कम है और फिर इस एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री बन जाता है ये वोलेटिलिटी कम है high growth prospects है for the future and because of they are trading at such a cheap valuation it makes a good entry point for our investors. So interested investor can look at this sector for investment purposes for to tap in India's long term growth story. India में अभी इतनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इतना ग्रोथ हो रहा है इतनी डेवलपमेंट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हो रहा है इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट स्ट्रेंथन हो रहा है तो इंडिया में भी जो ग्रोथ स्टोरी है कंजम्पशन स्टोरी इज सो स्ट्रॉन्ग इन सबको अगर आप मिलाकर देखें तो पावर इंडस्ट्री की अभी ग्रोथ कहीं नहीं जानी है फॉर द नेक्स्ट 15-20 years इन इंडिया और इसके वैल्यूएशन चीप है इसके वजह से इन्वेस्टर्स इसमें देख सकते हैं टू मेक अ गुड वैल्यू बेट सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर जरूर आए फॉर द नेक्स्ट वीडियो आई होप टू सी यू अगेन बाय एंड हैव अ नाइस डे